lovely people who've already joined the live stream. By the way, सवाल के साथ like button जरूर दबाइए. सुमंत कह रहे हैं, good morning Jamie. Good morning my friend. How are you? India is going into the World Cup भगवान भरोसे because of Sky and Gill. To a certain extent, yes, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप. सोहम कह रहे हैं, good morning Jamie bhai. Good morning Soham. How are you? Video like. Thank you. We like Soham. Like the video. Really hoping Samson's performance last night ends the stupid experiment of Shubman at the top. I hope so too, my friend. I hope so too. And also, hopefully, one of Rinku Rishan comes in for him for the squad. Good point you've raised. Let's assume. Oh, by the way, आज 1:30 इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो तकरीबन 1:30 announce होगा. So you can join me this afternoon. I'll do another live show. I'll see you all in a few hours from now. I'm frankly not expecting too many changes. Yes, शुभमन गिल का खराब फॉर्म चल रहा है. आप मैं काफी महीनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं. Was it a convenient toe injury to get Samson a chance? I don't know, but I have to ask the question because मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है ऐसा खराब फॉर्म को इग्नोर करना. हाँ, ये आपके टेस्ट कैप्टन है, हाँ ये आपके वनडे कैप्टन है, हाँ ये आपके T20 वाइस कैप्टन है, हाँ ये तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी मार चुके हैं, ये फ्यूचर के प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन एक T20 वर्ल्ड कप से पहले अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल मेरे हिसाब से एक लायबिलिटी बन चुके हैं. और टीम के पास ऑलरेडी उनसे पहले, बल्कि उनसे काफी पहले एक लायबिलिटी ऑलरेडी है जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, हमारे कप्तान. लेकिन होता क्या है कि जब टीम जीत रही है, और देखिए कल एक और सीरीज जीत स्काई के अंडर. आई विल से इट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, इंडिया आर येट टू लूज अ सीरीज अंडर स्काई एज कैप्टन. तो ये टीम जब जीत रही है, टीम नंबर 1 है, we tend to sweep certain issues under the carpet. So the BCCI has swept the lack of runs from Sky firmly under the carpet. वो एक ऐसी समस्या है जिनको टीम झेल कर खेल रही है. ठीक है, but you cannot have two problems, and your problems definitely दोस्तों cannot start at the top. So question for you, please share your views. क्या आपको दो सेम किस्म के प्लेयर्स चाहिए? अभिषेक शर्मा is a basher of the ball. What works for you? Keeping in mind कि केवल 5 T20 मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले. A basher in अभिषेक शर्मा and a technically superior anchor in Gill, or a basher in Abhishek and a basher in Samson. I know what I want, but I want to hear from you. आदित्य कह रहे हैं, हार्दिक उस्ताद जी, हमारे 33 नंबर जर्सी ने कमाल कर दिया. I hope Gill stays in ODIs and tests and doesn't ruin our chance of winning back-to-back T20 World Cups. बिल्कुल, I think everyone on this live stream will agree with what Aditya is saying. Jimmy, India should wrap Hardik Pandya in cotton wool and cannot risk injury before the World Cup. बिल्कुल, we've seen the impact of what happens जब हार्दिक पांड्या, एक फिट हार्दिक पांड्या खेलते हैं और जब वो किसी भी इंजरी के कारण बाहर जाते हैं. World Cup 2023, the guy was doing so well, stuck his foot out in the follow through, got injured, missed the World Cup. चलिए, उनके चलते मोहम्मद शामी को मौका मिला, और अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते तो हम कभी उस महान वनडे बॉलर शामी को नहीं देख पाते उस वर्ल्ड कप में. But yes, I agree with you. We need to wrap him in wool. But does that mean you don't play him for the next 5 matches? I would still play Pandya in all 5 matches because you need him. The batting is working. The bowling could be a little better, but yes, we need him. Yo, anything keh rahe? Good morning. Good morning, sir. कैसे हैं आप? So I'm getting, I agree, we do need a backup opener, but then that should be Ishan or Yashasvi. Absolutely. I mean, Ishan Kishan has just come off, 500 runs in the Syed Mushtaq Ali Trophy, 30 odd sixes. I think he had 33 sixes, outstanding strike rate, and he got his team Jharkhand to the title. So it's impossible to ignore him. लेकिन क्योंकि गिल ने एक मैच नहीं खेला और सैमसन ने उस मैच में खेला और उन्होंने 22 गेंदों पे 37 रन मारे, आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं क्या सैमसन ने अपनी इनिंग्स सही टाइम की. बिल्कुल, Tilak Verma got way more runs. Hardik Pandya got way more runs at a strike rate of 250. In isolation, Samson's innings will not really stand out in the scorecard. लेकिन अब आप बैक स्टोरी देखिए, क्यों मैं एक 22 गेंद 37 रन की पारी को लेकर मैं इतना खुश हूं. बिकॉज इट्स स्टिल व्हाट गिल वाज नॉट डूइंग. गिल का पूरा साल, आई थिंक 18 इनिंग्स हो गए, आप लोग जानते हैं स्टैट्स, 18 इनिंग्स से इस फॉर्मेट में इनका कोई 50 नहीं है. बीच में साइंस देखे कि हाँ बंदा वापस फॉर्म में आ रहा है, but not one of the times when even he's got 50s or that 47 or that 32 has he done what Abhishek and Samson are doing. That is operate at a strike rate of 160, 170 plus consistently. Give a start. तो भले ही से 37 रन as compared to
70 odd from Tilak and 60 odd from Pandya. It's not even half the runs scored, but it's the impact that Sanju Samson gave yesterday, which is why I believe it's a perfectly timed jawab. आईना दिखा दिया एक, I mean, it's a fact, right? He has shown them the आईना कि भाई ये मैं कर सकता हूं और आप मुझे बाहर कर रहे हो. हाँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूं सैमसन, लेकिन मैं 100 मार सकता हूं. पिछले साल इनके 3-4 डक्स थे, लेकिन इनके 300 भी थे, राइट? Shubman Gill has 100 and it came like almost 3 years ago. So I'm looking at the fact that Samson plays the way that India need to be playing to win a T20 World Cup. और मेरे हिसाब से Gill radiation edits is saying hi. Kaden, breakfast कर लो. बेटा है मेरा. But yeah, look, just going back to the fact that it's not about the big runs. Of course, Sumant keh rahe, Jamie, I really was pleased to see Tilak at number 3. Hope India don't chop and change again. Correct. We've discussed this. We've discussed the impact जो हमें लगता है तिलक वर्मा की बैटिंग पर हुआ जब उनको एक सेट रोल नहीं मिला. ये वही तिलक वर्मा है जिन्होंने पूछा मेक पैनकेक्स ब्रो प्लीज. बिल्कुल ब्रो, ये शो करके I'll come make pancakes for you. Yo कह रहे हैं yesterday same team, just add Akshar in place of Jitesh. Sundar can give 2 over power play so we can see Bumrah in middle more. It's a good point. अक्षर पटेल अभी इंजर्ड हैं, लेकिन आई हैव नो डाउट कि वो वापस आएंगे वर्ल्ड कप के लिए. और अगर सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके नंबर 1 कीपर बनते हैं और फिर जितेश का चांस नहीं है. फेयर इनफ, होता है. But again, we'll know in about 4 hours from now when the BCI selectors have that press conference. 1:30 बजे की press conference है शायद, but these things often change time के हिसाब से. It'll be a very 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 keen process to follow कि आज selectors क्या कहते हैं. Ishan Kishan 500 runs, 33 sixes, umda strike rate. Has it done enough to knock off the poster boy of Indian cricket, Shubman Gill from the team? I don't think so. अगर और इम्पॉसिबल नहीं है कि एक सीरीज T20 वर्ल्ड कप के एक सीरीज पहले, क्योंकि जो स्क्वाड आज ये लोग अनाउंस करेंगे ये उन 5 T20 मैच की सीरीज के लिए भी है. यानी कि न्यूजीलैंड के साथ अगले महीने में, तकरीबन एक महीने में जो सीरीज होने वाली है, इट्स अ लास्ट सीरीज. इट्स गोना बी द सेम स्क्वाड. इज इट अनथिंकेबल दैट दे परसिस्ट विद गिल? नहीं, बिल्कुल they can persist with Gill. But looking at the way that Samson plays dual roles of a fantastic opener when he's on song, a keeper, कल उन्होंने बड़ी अच्छी कीपिंग की, I think 3-4 catches पकड़े. So it's offering you 2 roles, like someone just said. I think Suman or was it Yo anything just said. You play Samson, you're getting a more aggressive opener who hits sixes, and you're getting a keeper, so you can play somebody else instead of Jitesh. So I'm posing, Jamie, do you think Varun was a tad expensive? Definitely. Anytime any bowler goes over 35 runs, he's expensive. So yesterday he went for 52. That is very expensive. But look at the kind of wicket. On Ahmedabad, on the flattest wicket in India, going for 52 and taking 4 wickets, I think that's a very good performance. कल की टीम वाइब ही कुछ और थी. बिल्कुल, ये वाइब की बात, राइट? When Shubman Gill opens, and again, I'm not bashing him anymore. I think let's move on. When Shubman Gill plays, India don't get to 200, right? For obvious reasons. He's too technical a player. When Samson plays, the team gets past 200. ये बहुत बार हो चुका है. So look at what I'm trying to say. Vikram saying, in an ideal world, would Ishan Kishan... In an ideal world, right now, a guy, anybody, आज हम कह रहे हैं ईशान किशन, but anybody who scores 500 plus runs with 33 sixes, a couple hundreds, fantastic strike rate, would walk into India's T20 squad, because the SMAT and IPL are the two formats from which you pick India's T20I team, right? Sky को हम झेल रहे हैं क्योंकि वो 1.5 साल से टीम को रिजल्ट्स देते हैं. अगर इंडिया 2 सीरीज भी हारती बीच में with this form, 35 की उम्र में उस guy को बाहर करते. They do not want to drop the captain. Yes, the guy cannot win a toss to save his life. He's not scored runs for 15 months, but the team is winning. So I'm saying there is room. एक non-performing asset के लिए जगह बनती है मेरे हिसाब से, और वो है Sky. लेकिन शुभमन गिल के लिए वो जगह नहीं बनती है, because as I said many times, वो मुझे एक natural, aggressive, हवे में बॉल मरने वाले ओपनर नहीं लगते हैं. And he doesn't play any other role, right? Sky is still the captain. Yes, he's your vice captain, but you don't need, or you cannot have 2 non-performing assets in your team.
You shouldn't have won, but right now I understand why Sky is being persisted with because he's the captain for the T20 World Cup. T20 World Cup के बाद Sky will not be playing much more cricket. ये मैं दावे से कह सकता हूँ. गिल बहुत क्रिकेट खेलेंगे ODI में, टेस्ट में, but right now there is still time to bring in Ishan Kishan, but he would not come in as Sky's replacement at 4. ईशान किशन अगर स्क्वाड में आएंगे तो वो बैकअप ओपनर के रूप में आएंगे. Jamie, I think they will play both Gill and Samson and drop Jitesh. Then you're not going to win the World Cup. In what world would you play Shubman Gill and Samson? That means if you're playing Samson, you're changing the batting lineup. You're going to put him back at number 6 again? Unfair. He won't work. You're going to bat him at 3? Unfair on Tilak Verma. There is no need to tinker with the batting lineup. Just drop Gill. Gill ko squad mein rakho. But do not start the World Cup with him for the first 2 matches. Let Samson and Abhishek open for the first 2 matches. आलतू फालतू टीम के साथ आपके पहले 2 मैच है. आप पहले यूएसए से खेल रहे हो, फिर आई थिंक यू आर प्लेइंग लाइक नमीबिया और नेदरलैंड्स और somebody. Then when you play Pakistan and Colombo in your 3rd match, then you can decide who you want to play. Sky is coming, not interested in batting, only chewing gum, showing faces. Like I said, he's not scoring runs, he's not winning the toss. What is he doing? Nothing. But they will still persist with Sky. Last night, even Abhishek looked in better rhythm because he had a high strike rate partner at the other end. Bilkul, absolutely, you're spot on. What a player does is when he brings in aggression into a very aggressive team. कल इंडिया के सबसे पाटा विकेट पर बैटिंग क्यों चली? क्योंकि सबके पास लाइसेंस था मारने का. गिल may have scored runs too. We discussed this in the preview show. कल गिल के पास अहमदाबाद के पाटा विकेट पर टेस्ट सेंचुरी है, ओडीआई सेंचुरी है, अंतर्राष्ट्रीय T20 सेंचुरी हैं और IPL सेंचुरीज हैं. So there's every chance he could have clicked as well. But would India have gotten to 230? I don't think so. Sky, I'm out of runs, not form. I heard that statement. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं. हमें रन चाहिए. It's a typical, it's putting up a face, right? It's happened to all of us. It's happened to me in life also. शोज नहीं चल रहे हैं, एक्टिंग गिग्स नहीं आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, पर फिर भी नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं और करूंगा. It's just a statement. Nobody, especially हमारे इंडियन क्रिकेट में, nobody admits कि दिक्कत है. क्या बीसीसीआई जानती नहीं है कि स्काई बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं? बिल्कुल. क्या बीसीसीआई जानती नहीं है कि शुभमन गिल उनसे बड़ा समस्या बन चुके हैं? बिल्कुल. But nobody admits it. To admit it is to acknowledge कि आपसे गलती हुई है. एक प्लेयर को चुनने में, एक प्लेयर को लंबी रस्सी देने में, एक प्लेयर को बूस्ट करने में. स्काई की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है. कोई भी और देश में अगर प्लेयर 35 की उम्र में 1.5 साल से एक 50 नहीं मारता, वो नहीं बनते. मे बी इंग्लैंड कम्स क्लोज, क्योंकि ये वो भी बड़ी फालतू सोच लेकर अपनी टीमें बनाते हैं. बट लाइक आई सेड, यस, मैं मानता हूं कि गिल बड़ी समस्या बन चुके हैं, उनको नहीं होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन फिर भी सीनियोरिटी के बेसिस पर, कैप्टन होने के बेसिस पर टीम जीत रही है. उनके बावजूद, स्काई की खराब फॉर्म के बावजूद, स्काई का खराब टॉस रिकॉर्ड के बावजूद टीम जीत रही है. तो सिलेक्टर्स उसी उम्मीद से वर्ल्ड कप में जा रहे हैं कि हाँ चलिए, स्काई प्रॉब्ली वोंट स्कोर मेनी रन्स. मे बी इक्के तुक्के मैच में, देखिए पहले राउंड में यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स, ऐसी टीम के सामने स्काई चल सकते हैं. लेकिन आप ये मान के चलो, आंख बंद करके इंडिया T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड को पास कर लेगी, राइट? Can you imagine if Sky doesn't score runs against USA at Wankhede, against Netherlands at Eden Gardens, against, is it Namibia they're playing in Delhi or something like that? जो भी teams हैं, sorry, I mean I'm calling them minnow teams. अगर minnow teams के सामने स्काई रन नहीं बनाते, लेकिन इंडियन टीम पहले राउंड के चारों मैच जीत के राउंड 2 में जाती है, you think it's not going to worry the BCCI and the coach? Absolutely. तो तब ये comments के बस I'm not short of form, I'm short of runs, they might come back to bite Sky. Shreyas in place of Surya after T20 World Cup would be perfect replacement at number 4. I get your point. I wouldn't say perfect because I think Shreyas has a couple limitations, but yes, that's a damn good option. And more than a batting at 4 option, I would say Shreyas should be the next captain. यो पूछ रहे हैं, do you think his wrist injury की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? हो सकता है, like we discussed in past shows, it's aging reflexes, it's an aging body. You're trying. It's not like he's trying to go into a shell. He's not playing the Shubman Gill role. कि नहीं, मैं 35 बॉल खेल के पहले अपने 35 बनाऊंगा. He's still playing the Surya Kumar Yadav way. Full credit, but
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. Also, teams will watch videos, they'll analyze. But like I mentioned a couple days ago, in regards to Sky, I don't think it's so much the process कि दूसरी teams इनकी footage देखकर उनको pre-plan करके out कर रहे हैं. He's just trying his best, but the best, unfortunately, at 35, with slowing reflexes post an injury, it's just not good enough. So I have genuine concerns, and I worry about Sky's form. But it is what it is. He's the captain. He's not going anywhere. Hi, Jamie. Hi, sportsman. How are you, my friend? Long time. Is our bowling attack too good to hide the frailties of two liabilities? Yes, we've discussed this for many, many weeks now. The bowling has been doing the job. Any format, right? Test, one day, T20. India's batting has been more culpable than the bowling. The bowlers still get the job done. Yes, there are days when they'll give runs, but they still get the job done. It's the batting across three formats which has not been able to shoulder that responsibility. And since we have only 5 T20I matches left, sports fan, before the T20 World Cup, we have two big liabilities in this team. We've discussed this for the last 2 weeks since the series began. One is Sky, one is Shubman Gill. टीम दोनों को झेल कर खेल रही है. टीम स्काई को 1.5 साल से ऊपर होकर झेल रही है. टीम को शुभमन गिल को झेलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उनको एशिया कप से पहले वापस 1.5 साल के बाद उनको T20I सेटअप में वापस लाया गया था, क्योंकि वो है पोस्टर बॉय इंडियन क्रिकेट की. एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस डिसीजन more than anything else, and that's totally fine. Cricket is not the game that you and I grew up watching. Cricket is now a cutthroat business. I get that. बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दो लायबिलिटीज लेके इस टीम को क्यों खेलना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं सैमसन को अंदर करो और गिल को बाहर करो. शुक्रिया माय फ्रेंड आज तल USA 2952 फॉर द लवली सुपर चैट. थैंक यू. योर क्वेश्चन इज, हाय जे, should we replace Dubey with Rinku? We definitely should, but I just don't see it happening because on the day Dubey still, again, he's really under bowled. He's not playing the traditional seam bowling all-rounders role. लेकिन कभी कभार जब उनको मौका मिलता है, he has this knack of breaking partnership. So I'm not a big Shivam Dubey fan, my friend, but I still think he will play more than Rinku Singh. Are bowling and batting doing good? What kind of pitches will India prefer in this World Cup? India they have no choice. This is not a BCI event. This is an ICC event. So India has no say. Just like we saw all the hullabaloo 2 साल पहले उस World Cup में, semi-final से पहले hullabaloo, final से पहले hullabaloo, India has no say in the pitches. And it doesn't even matter because Feb के महीने में winter की समाप्ति पर आपको dew और toss factor सबसे परेशान करने वाले हैं. ओह, स्क्वाड आ चुकी है भाई. अभिषेक, सैमसन, गिल, तिलक, स्काई, हार्दिक, दुबे, अक्षर, कुलदीप, वरुण, अर्शदीप, बुमराह, तेज, रिंकू, राणा. You need Rinku for fielding. With Gill not in 11, only two good deep fielders, Tilak and Hardik. You need Rinku. You need Rinku, but Rinku is not going to the World Cup, my friend. कल गिल नहीं खेला तो 200 बन गए और वही पे बिल्कुल हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब गिल खेलते हैं तो 200 नहीं बनते हैं. Gabriel saying, not a big Dubey fan, you always clutched in pressure moments. No, he's actually had some good moments in the World Cup. He didn't get big runs, but there were a couple situations in the last World Cup which were played on pretty bad tracks. So the big scores didn't come from Dubey, but there were times when he did the job. Look at the Asia Cup final. Tilak Verma was struggling. Dubey's cameo had a massive role. So I disagree with you. He has actually performed pretty well in clutch moments. Abhay, good morning. How are you? वो बोरिया पीआरजी बोल रहा है कि अगर गिल एनजेड सीरीज में भी नहीं चला तो दुबे को टीम से बाहर करो एंड गिल को नंबर. भाई क्या ही बोले, सिम C41 आपने कह दिया मुंह की बात. अब क्या कहें, मैं कह रहा हूं ये जो बिजनेस चलता है ना इंडियन क्रिकेट के पीछे, ये थोड़े हानिकारक है टीम के लिए. थैंक यू जेमी सर फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चन. थैंक यू माय फ्रेंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड आई होप सवाल के साथ, कमेंट्स के साथ, फीडबैक के साथ हर व्यक्ति जो इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ा है वो लाइक बटन दबाइए. तो प्लीज लाइक बटन दबाइए इस लाइव स्ट्रीम का. couple more questions. Let me know. I have a video call at 10 o'clock, यानी कि 11 मिनट में एक क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल है मेरा. It's very informal, that's why I don't, but still I need to go in about 2 minutes. If Samson somehow opens, we get in one more slot open. Akshar, I would go for Akshar in place of Jitesh or Rinku maybe. At least Dubey crunch session में कैसे करके perform कर. बिल्कुल, I have seen Dubey. I'm not a Dubey fan, but he's performed in World Cups and in Asia Cup finals. So
I think 14 are fixed. It's either Sundar or Rinku. I agree. It's either Sundar or Rinku. सर वही खेल रहा था. He always performed in clutch moments. अच्छा हाँ एग्जैक्टली भाई एक टाइपो ने पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया यार. मैं सोच रहा हूँ यार दुबे ने बड़े मैच में किए तो हैं. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. मैंने उनको देखा T20 वर्ल्ड कप में बड़े रन नहीं आए लेकिन यहाँ 24 यहाँ 22 क्लच मैचेस में बंदा काम काम तो कर लेता है वो. सो आई एग्री. हाँ इट्स इट्स अ टाइपो. चलिए मैं चला. आई हैव टू गो गेट रेडी फॉर दिस लास्ट वन. पहले ही रिंकू संजू आउट है जस्ट गिल के वजह से. अब बोल रहे हैं दुबे को भी बाहर करो. पता नहीं यार एक्सक्यूजेस तो बहुत दे रही है लोग. Will you be covering World Cup matches? Yes, I've applied for all the Delhi matches, a couple Bombay matches. Only first round has come. तो मैं श्रीलंका नहीं जाऊंगा पाकिस्तान इंडिया के लिए. लेकिन जो इंडिया में जो भी मैच इंडिया खेलेगी वो मैं कवर करने की प्लान तो किया है. मैंने अपने वो मैचेस मैंने टिक किए हैं थ्रू द आईसीसी वेबसाइट. अब देखते हैं क्या होता है. हो जाएगा वैसे. But I've got a couple film shoots which are clashing with the shoots, but with the matches. But देख लेंगे. चलिए मैं चला. Come back and see me in a few hours. 1:30 बजे तकरीबन 1:30 बजे बीसीसीआई सिलेक्टर्स इंडिया का स्क्वाड अनाउंस करने वाले हैं. तो उसके बाद आप जुड़े मेरे साथ और हम बहुत सारी बातें करेंगे. Frankly, I don't expect too many changes, but we'll see. ईशान किशन, रिंकू क्या होता है. गिल क्या स्क्वाड में होंगे. See you in a few hours from now. Take care. Goodbye. जय हिंद.